Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has arrived at the State Assembly with a copy of the UCC report, which will be tabled in the Vidhan Sabha today itself. He has stated that today the end will be waiting as the bill will finally be presented in the State Assembly. The Uttarakhand Cabinet had earlier given its approval to the UCC draft report back on Sunday, and the proposed draft aims to establish a uniform civil law applicable to all communities within the state. Let's in fact listen in to what the Chief Minister has to say before the bill. Meanwhile, there are of course live shots also that are coming in. Right there we can see proceedings are underway in the Uttarakhand Vidhan Sabha at the moment. The Chief Minister of the state, Pushkar Singh Dhami, has in fact arrived at the Vidhan Sabha. Earlier, of course, he was carrying the Constitution of India before exiting his house. And of course, live shots coming in at this point from the Vidhan Sabha in Uttarakhand at this point. Marriage and inheritance equality, of course, slated to be included. CM Dhami has earlier stated that it's a matter of pride for all in the state, and the aim is to give equal rights to all citizens. It is a final push for the UCC in Uttarakhand at this point. Remember, viewers, an 800+ page report was in fact drafted earlier itself, and you can see those visuals earlier of Pushkar Singh Dhami on the left when he was exiting his house. He's holding a copy of the Constitution of India, and right now live proceedings on the right side of the screens, Vidhan Sabha in Uttarakhand. Praveen Kumar, my colleague, is on the phone line. Over to you. देखिए भाई, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 11 बज गए हैं, अभी सत्र शुरू हो रहा है। पहले राष्ट्रगान के बाद ये रखा जाएगा, इसको यूसीसी बिल को टेबल किया जाएगा। आज चर्चा होगी और आज ही पास होने की संभावना जताई जा रही है। सभी विधायक यहाँ पर पहुंच गए हैं और सबकी नजर विधानसभा पर है, क्योंकि विधानसभा जो है आज इतिहास रचने जा रहा है। एक छोटा सा राज्य, पहाड़ी राज्य, देश में यूसीसी की शुरुआत करने जा रहा है और एक नजीर पेश होने जा रहा है। आज कहीं ना कहीं यहाँ से पास होने के बाद सरकार इसको लागू करेगी, धरातल पर उतारेगी और सरकार जो है इसको जल्दी से जल्दी राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद जमीन पर उतार देगी। जी, Indeed, and as I was stating earlier, there were in fact live visuals that we are showing to our viewers. Earlier, of course, Pushkar Singh Dhami has stated that it's a matter of pride for all, and the aim is in fact to give, UCC to benefit everybody, especially with regards to empowering and facilitating equality. He has also stated that UCC bill is the need of the hour. What can you tell our viewers regarding statements made by CM Dhami? देखिए, जो जितने भी लोग हैं, खास करके जो युवा हैं, उनको वो काफी खुश है कि मुख्यमंत्री ये लाने जा रहे हैं। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो रही है। इसमें अभी ड्राफ्ट जब सार्वजनिक होगा तब सारी चीजें पता चल पाएगा कि किस किस चीजों को जगह दी गई है, किन किन मामलों को जगह दी गई है। लेकिन कहा ही जा रहा है कि गोद लेने के नियम एक होंगे, तलाक हलाला पर रोक लग जाएगी, एक समान शादी के उम्र होंगे, जो लिव एंड रिलेशनशिप को अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना पता और उजागर करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो पैतृक संपत्ति है उसमें उसके बंटवारे में बेटी और बेटियों को समान जगह सभी धर्म में मिल जाएंगे। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको इसमें रखा गया होगा, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिस पर चर्चा के बाद चीजें सामने आएगी। जी, Indeed, as you stated, crucial discussions to take place before, in fact, proceedings specifically regarding the UCC will, in fact, commence. But what is really interesting is the draft report in itself. Earlier, of course, we had access to it. We'd gotten to know that marriage equality as far as inheritance rights were also included. What can you tell our viewers about this? देखिए, जो प्रगतिशील समाज में जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं, तो जो ये सोचते हैं कि हमें एक देश एक विधान पे चलना चाहिए, धर्म कोई भी हो, कौम कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, जो एक नियम होने चाहिए, एक तरह के लॉ होने चाहिए।
वो तमाम लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो धर्म के पैरोकार हैं, जो कि धर्म किसी खास धर्म के को लेकर हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि इससे उनके धर्म के मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि किसी भी धार्मिक जो क्रियाविधि है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर का कानून बनेंगे, शादी के कानून बनेंगे, लेकिन शादी के पद्धति पर कोई रोक नहीं लगेगी। वो अपने अपने धर्म के अनुसार शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी की उम्र सरकार तय करेगी। उसी तरह तलाक है, तलाक के लिए अगर आप सहमति से पति पत्नी तलाक देना चाहते हैं तो उसके लिए एक उम्र होगी। क्रिश्चियन धर्म में, मुस्लिम धर्म में और जो 3 तलाक हलाला जैसी स्थिति नहीं होगी। तलाक दिए जाएंगे लेकिन नियम एक होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, अभी और भी बातें निकल के सामने आएगी, उसके बाद प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं। Indeed, and in the report that we had earlier accessed, there was also a protection of local communities, especially the tribal communities, with regards to drafting this bill that was taken into consideration. What can you tell our viewers about this? देखिए, जो अभी सूत्रों के हवाले से ही पता चला, आधिकारिक तौर पे इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है कि जो यहाँ पर जो जनजातियां हैं उसको इससे बाहर रखा गया है। विपक्ष का सवाल यही है कि अगर आपने जनजातियों को बाहर कर दिया तो क्या किसी खास संप्रदाय को लेकर आप इसको लेकर आ रहे हैं? और अगर फिर यूनिफॉर्म कहाँ हो गया, इक्वलिटी की बात कहाँ रह गई, एक समान कानून कहाँ रह गया? जब समाज में कुछ लोगों को आपने इसके दायरे से बाहर निकाल दिया तो समानता तो आई नहीं। तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जब टेबल किया जाएगा ये बिल, उसके बाद सारी चीजें निकल के सामने आएगी। Indeed, and I'd also like to in fact inform our viewers of what exactly are the likely recommendations that have in fact been considered. Inheritance rights, of course, to be given to both son and daughter. Equal inheritance rights could be in fact given to children of the first wife, as well as a universal minimum age of marriage to be set. Meanwhile, polygamy and polyandry have also been banned, as well as it most likely has a proposal regarding compulsory registration in live-in relationships, as well as mandatory financial support to wife and children after divorce. But in the meantime, of course, you can see, viewers, at this point, live proceedings are underway in the Vidhan Sabha in Uttarakhand at the moment. Earlier, of course, CM Dhami, before exiting his house, he was carrying the Constitution of India. He has also stated that this moment is a matter of pride for people across the country. What remains to be seen is what exactly will this bill take forward, and will it set a template for the entire country as well. There were in fact several reactions that have been pouring in regarding this since the morning. Several leaders in Uttarakhand have in fact commented regarding this as well. Former Chief Minister of the state and Congress leader Harish Rawat has stated that the state government and chief minister are very eager to get it passed, and the rules are not being followed. So meanwhile, of course, even as the bill is set to be tabled, the Congress party has in fact hit out at the Bharatiya Janata Party. Meanwhile, with us on the broadcast is Mr. Himanshu Bhatt, political analyst. Good morning, sir, and thank you for joining us on NewsX. Crucial developments underway in Uttarakhand and Dehradun at this point. The Chief Minister of the state is in fact slated to table the UCC bill. It's a major push. UCC, of course, one of BJP's 3 key election manifestos. What do you make of this development, and what does this mean? What are the implications of it? Would it set a template for the rest of the country? Because if you know, since their inception, BJP has been talking of 3 policies. Ram Mandir at Ayodhya, abrogation of Article 370 and 65A in Kashmir, and uniform civil code. Now the first 2 have been achieved. What is left with UCC? Now, UCC is a bigger complex social issue where
all sections of the society will have to be established and all have to be convinced. And that's why this pilot project of UCC in Uttarakhand government. What we are having right now is what you see is a pilot project being tested. And this will set a template for 2024 election. This is what I see at it. And UCC, Uniform Civil Code, is a civil code for, see, when in India, we have one vote for one person, irrespective of the caste, creed, religion, everything. Why not the similar, uniform civil code for everybody? Then it's going to benefit, mind you. Whatever these people say, politically, they might want to draw advantage and they might want to create chaos and halabulla and all those things. But what it is going to do is, it is going to bring about uniformity in the society. And especially, women till now, for 70 years, they have been neglected in our society. And they constitute about 50% of our total electorate. So why not use it? Just imagine the second biggest majority of the country, women, are so happy with the music. You are seeing them, the triple talaq, and you are divorced. Now those things will go. It will collide with the Muslim personal law regulations. But then, in a country where you live if you want to live in homogeneity, if you want to be one as a nation, because a nation first is a theory of this government. And nation should come first, irrespective of your religion, caste, creed, or anything. That's what I have to say. Indeed, sir, and we are seeing that the Congress party in particular has hit out at the BJP over this. As I was just stating earlier, former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat had in fact stated that rules are not being followed, and that the central government is using a sensitive state like Uttarakhand for tokenism. If they want to bring UCC, it should have been brought in by the central government itself. Meanwhile, of course, we have seen the INDIA bloc divided over this. The Aam Aadmi Party and Uddhav Thackeray Sena, Shiv Sena, have in fact supported the UCC. Meanwhile, against this are the CPIM, the TMC and the RJD. See, this will happen. See, this has brought about a big divide about India Alliance also. Because there are some people who bank only on the minority vote. Now, those are the people who are going to be, not liking this UCC. But those who believe in nation first, will always support. And I must say that, Uddhav Thackeray is on the way back to NDA polls. Because his statement of yesterday are suggesting so many things, but that's not the topic now. So what I'm saying is Uniform Civil Code is going to benefit Indian social fabric to live together in a much, much, much better way than it is right now. Yes, sir. All right, sir. I'd like to thank you. And also joining us on the broadcast this morning is Mr. Raman Malik, a BJP spokesperson. Good morning, sir, and thank you for joining us on NewsX. Crucial proceedings underway in the Vidhan Sabha in Uttarakhand at this point. The UCC bill set to be tabled by CM Pushkar Singh Dhami. Of course, one of the key poll promises of the Bharatiya Janata Party in your election manifesto. What would you like to tell the people at this point? What I would like to tell the people is that Uniform Civil Code is very well inscribed under the Constitution in Section 44, if I'm not wrong. And that had to be in place if the country needed a secular credential. And that has been lying there in the Constitution ever since it was adopted. I believe it is about time that all states in India come forward, draw out the Uniform Civil Code, and make a conducive atmosphere for the center also
so that a uniform civil code making a secular rights and duties for all citizens must be adopted in this country. Secularism is not about religion. Secularism is about equality and parity, which has to now be an important integral part of the country going forward. And I welcome BJP government in Uttarakhand. I welcome Pushkar Singh Dhami ji for fulfilling the poll promise and the aspirations of the people of Uttarakhand by bringing in this code, a deliberate search for what all should be covered. The board had done extensive research. They made suggestions which have been accepted by the cabinet. I believe that it is fulfilling the aspiration like BJP fulfilled the aspiration of creating Uttarakhand. We have fulfilled the aspiration of people by bringing in UCC. And let's understand this, that the country is not about a Hindu or a Muslim. The country is about 140 billion people who 1.4 billion people who are there, 140 crore people who are there, and who make and constitute the emotion, the cultural nation known as Bharat. And Bharat has never done a pakshpat or a adharam ever since the Sanatan period. And we shall not do it now also. All right, sir. With that, I would like to thank you for speaking to us. And also with us on the broadcast is Mr. Anshu Avasthi, Congress spokesperson. Good morning, sir, and thank you for joining us on the broadcast. We've just heard Mr. Raman Malik of the Bharatiya Janata Party and what he had to say. What would your response be? What would the response of the Congress Party be regarding this? देखिए, जब ये देश आजाद हुआ, इस देश की आजादी की लड़ाई में सभी ने अपना अपना योगदान दिया, वो किसी भी जाति और धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी ने लड़ाई लड़ी, सभी ने अपना योगदान दिया। लेकिन जब देश का संविधान बना तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया। ये ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जिससे इस देश के लोगों का अहित ना हो, उनके साथ भेदभाव ना हो। चाहते तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के नेता थे सबसे ज्यादा संविधान सभा में, जो 300 सदस्य थे उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के थे। हम ऐसा संविधान बना देते कि जिससे दूसरी पार्टियां सर्वाइव न कर पाती, दूसरे लोग नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये देश रहना चाहिए, यहाँ के लोग महत्वपूर्ण हैं, उनके साथ भेदभाव ना हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, सभी समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाथ हैं, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं हैं। बाकी संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। प्रतिज्ञा वितरित की जाए, प्रतिज्ञा दे दी जाए।
हम कुछ बोलते हैं तो पीठ से आता है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सुनने का काम करें, और जब इस तरीके का ऐसा Of course, we have seen the proceedings in the Vidhan Sabha in Uttarakhand at the moment. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has in fact tabled the UCC bill, and apart from this, the draft bill has also been circulated amongst members of the House. The UCC bill, of course, has been tabled earlier. There was a cabinet All right, there of course already the bill has been tabled in the Vidhan Sabha or the Uttarakhand Legislative Assembly. The Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has tabled the UCC bill. Meanwhile, Bharatiya Janata Party of course saying that it is a revolutionary move. We have in fact seen that the bill draft has been circulated amongst members of the Vidhan Sabha in Uttarakhand. There were in fact visuals coming in from Dehradun. Of course, ruckus and sloganeering was taking place in the assembly. But meanwhile, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has tabled the UCC bill in the assembly. But apart from this, of course, a major poll promise of the Bharatiya Janata Party government. Earlier, of course, as a political analyst Himanshu Bhatt was saying on the broadcast, the BJP has in fact delivered on two of its key poll promises. This was something that even Prime Minister Modi had in fact stated yesterday with regards to the abrogation of Article 370 and the building of the Ram Mandir. And this, of course, remains to be seen whether the push for UCC in Uttarakhand and the realization of this would in fact serve as a template for UCC push pan-India as well. Meanwhile, joining us on the broadcast is my colleague Praveen Kumar. Praveen, over to you. The Chief Minister of Uttarakhand has in fact tabled the UCC bill in the Vidhan Sabha. The draft bill has been circulated in and across the members of the Vidhan Sabha. Meanwhile, it seems that the Uttarakhand Assembly has been adjourned till 2 p.m. What can you tell our viewers? देखिए, पूरी तरह से अगर हम कहें तो ये इतिहास अपने आप में रचा जा रहा है, खास करके विधानसभा उत्तराखंड के द्वारा। मुख्यमंत्री यूसीसी को टेबल करने की अनुमति मांगी है, यूसीसी को टेबल किया जा रहा है। सभी जो सदस्य हैं विधानसभा के उनको जो सर्व किया जा रहा है, जो बिल है उसको सर्व किया जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, खास करके उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए, जो पूरे देश को एक तरह से अग्रणी भूमिका में आकर यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुल मिला के देखें तो बड़ी खबर है अपने आप में, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं, और तमाम विधायकों ने ये कहा था कि जो प्रश्नकाल चलाया जाए उसके बाद चीजों को रखा जाए, विशेष सत्र ये नहीं है। तमाम मुद्दे उठाए गए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि एक दिन का हमें मौका दिया जाए पढ़ने का, उसके बाद जो है इस पर बहस हो। इन तमाम जो मांग के बीच मुख्यमंत्री को टेबल करने की अनुमति मिली। इतिहास रचा जा रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तराखंड में इसको लागू किया जाएगा राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद, और अपने आप में नजीर पेश करते हुए उत्तराखंड का विधानसभा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड की सरकार। All right, and it seems that there are certain reactions that are coming in from different leaders at this point regarding the developments that are taking place in Uttarakhand. Let's in fact take a look at these. यहाँ कहा जा रहा नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है, और ड्राफ्ट किसी को उपलब्ध नहीं है, न मीडिया में है, और
जो ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है, आप तत्काल उस पर चर्चा करना चाहते हैं। 700-800-900 पृष्ठों का ड्राफ्ट बताया जा रहा है। तो इसलिए मैं अपनी स्टेट लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो तुमने कार्य मंत्रणा समिति को जो है बिल्कुल इरेलीवेंट कर दिया है, नियमों को इरेलीवेंट कर दिया है, तो हम उसे त्यागपत्र दे रहे हैं। मेरी शिकायत, क्योंकि धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती, जो सारे देश के ऊपर लागू होता। हमारे यहाँ जो कानून बनेगा भी तो वो हमारी सीमाओं के लिए होगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एस.टी. हसन साहब हैं। एस.टी. हसन साहब, आज जो है यूसीसी उत्तराखंड विधानसभा में आज पारित हो जाएगा, किस तरह से देखते हैं इस कानून को? देखिए, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कुरान शरीफ के खिलाफ हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर कहीं उसमें कुछ ऐसा होता है जो कुरान ने हमें हिदायत दी है, हम वो फॉलो करते हैं। हम ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान फॉलो करते हैं। हम 1450 साल से बेटियों को संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में उनका हक दे रहे थे। किसी को कोई परेशानी आज तक तो हुई नहीं। अगर वो नहीं चेंज होता है या और उसके मुताबिक कानून है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर उसके खिलाफ है तो हम मानने को तैयार नहीं। लेकिन हसन साहब, आप नहीं मानते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्या ज़रूरत पड़ गई? क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताइए। परेशानी क्या हुई? 76 साल से देश स्मूथली चल रहा है, आपको परेशानी क्या हुई? क्या किसी ने लड़ाई झगड़ा करे? क्या किसी ने आपसे शिकायत करी? आपको तो वोट पोलराइज करने के लिए हिंदू मुसलमान करना है, वही आप कर रहे हैं। 76 साल में क्या परेशानी आई बता दीजिए, जब स्मूथली चल रहा था तो ज़रूरत क्या है इस यूसीसी? धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.